Good evening, everyone. Yesterday I was explaining you the how you will write the name of the suffix second. It means up to the like IUPAC nomenclature, up to the root words, prefix, suffix second, as well as that saturated prefix, unsaturated prefix. Already I explained how you will write the name. Yesterday in last video I was explaining you how you must learn the name of the you must learn the name of the like functional group, that which like any functional group is written as a suffix second, what is the name of that functional group, and any functional group is written as a prefix, then what is the name of that functional group. In this video I am going to explain you the rules for IUPAC nomenclature. In different books many rules are given. अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में डिफरेंट बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं, बट ये कोई रटने की चीज़ नहीं है कि आप बुक से उठा के IUPAC रूल रटे जा रहे हैं. बिकॉज इन क्वेश्चन नेवर आस्क द रूल, दे विल आस्क द क्वेश्चन एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट आई विल गिव यू द वेरी शॉर्ट 3 notes as well as 4 rule, and then all the rules are like I am going to mix the in notes. That all the rules are mixed in that note, and one by one I will explain it. If you will feed this in your mind, तो maximum जो चीज़ें हैं वो इसी में कवर्ड हो जाएंगी. ओके, तो टुडे राइट डाउन द rules for IUPAC nomenclature. इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, बस सुनना है. व्हेन यू विल लिसन, अब सब चीज़ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फीड हो जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन द रूल, फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द फ्यू नोट्स. फर्स्ट नोट नंबर 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोट नंबर 1, नोट नंबर फर्स्ट, द सेलेक्टेड कार्बन एटम चेन, द सेलेक्टेड carbon atom chain must be longest, continuous. The selected carbon atom chain must be longest, continuous, with maximum number of prefix, with maximum number of suffix first. Suffix first means like double bond and triple bond, that already I explained. जो आप चेन सेलेक्ट कर रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, सफिक्स फर्स्ट भी होना चाहिए. थर्ड, नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो दिस इज द नोट नंबर फर्स्ट. अब देखिए ये सीनियरिटी, आप ऐसे जाएंगे सीनियरिटी के हिसाब से, कोशिश करेंगे कि किसी भी जो चेन आप सेलेक्ट कर रहे हो, देखो इट्स रूल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज फीड इन योर माइंड कि आप जो चेन सेलेक्ट कर रहे हो वो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप उसमें आना चाहिए उस चेन में. सफिक्स फर्स्ट मैक्सिमम मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उसमें मैक्सिमम आना चाहिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स आना चाहिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ द लाइक लॉन्गेस्ट हो, कंटिन्यूअस हो. तो दिस इज द फर्स्ट नोट. दिस इज नॉट द वन रूल, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रूल. बहुत सारे रूल को एक में कंबाइन कर दिया मैंने. गेटिंग और नॉट? इट मीन्स अब नाउ यू रिमेंबर दैट द सेलेक्टेड कार्बन एटम चेन मस्ट बी लॉन्गेस्ट, कंटिन्यूअस, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स, विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप चेन सेलेक्ट करो लंबी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यूअस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफिक्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो. जितना भी बड़ा कंपाउंड दिया हो, अगर आप इस नोट को दिमाग में रखेंगे तो हम फर्स्ट रूल जो सिलेक्शन करते हैं रूट वर्ड्स का, वो इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे. क्लियर? आई होप फर्स्ट नोट इज क्लियर. नोट नंबर सेकेंड,
Note number second is selection of the, like when you will start the selecting root words, numbering is always start from primary carbon atom and end up to the primary carbon atom. कभी भी नंबरिंग प्राइमरी कार्बन एटम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि नंबरिंग इज ऑलवेज start from 1 degree carbon atom and up to 1 degree carbon atom. मीन्स हमेशा नंबरिंग 1 डिग्री कार्बन एटम से स्टार्ट करके 1 डिग्री कार्बन एटम तक कंप्लीट करेंगे. ये दिस इज द सेकेंड नोट. वाई यू सी दैट अगर मैं कहूँ कि CH3 CS2 CS2 और OH, when I will explain you the rule, that time I told you कि minimum number of the functional group rule होना चाहिए. This is the most important rule, minimum number of the functional group. तो अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देते हैं तो यानी कि नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3. बट इफ आई विल राइट दिस फंक्शनल ग्रुप इज लाइक दैट CS3 CS2 and CS3 and here if I will write CH and OH. Now you see that this OH group is present here. OH group is present here. So if OH is present here, then you start from here and according to rule जो बुक में भी लिखा है और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हियर यू सी दैट फंक्शनल ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट. फंक्शनल ग्रुप को हम कम से कम नंबरिंग देंगे अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल. तो अगर सीनियरिटी टेबल ऑलरेडी यू रिटेन, तो सीनियरिटी टेबल के हिसाब से अगर हम इसको मिनिमम नंबर देंगे तो यहाँ पे तो हमारा सही हो गया. बट हियर यू ऑल नो दैट नंबरिंग विल स्टार्ट 1 2 and 3. दिस इज करेक्ट. बट अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नंबरिंग मिनिमम नंबर इसको मिलना चाहिए, तो वाई नॉट दिस वन इज 1 2. यहाँ से हमारा ये भी सही हो सकता था लेकिन ये हमारा सही नहीं है. वाई? Because this is not the primary carbon atom. You see this carbon is directly linked with the 2 carbon. So that is why this is secondary carbon atom. The numbering is always start from primary carbon 1 degree carbon atom and end up to the 1 degree. 1 डिग्री से शुरू करेंगे और 1 डिग्री तक ले जाएंगे, बीच में नहीं रोकेंगे. क्लियर? तो that is why we can follow this note number second also. Understood? I hope these 2 notes are clear. Note number third. And note number third is nothing. After third I am going to give you the 4 rule. Note number third, all the rules are arranged, all the given rules. मैं नीचे जो rules दिखाऊंगा आपको उसके बारे में यहाँ लिखने जा रहा हूँ. all the given rules are arranged according to their preference. Preference means 4 number rule is more important than third number rule. Third number rule is more important than the second number rule, and second number rule is more important than the first number rule. So this is the according to the preference. All the given rules are arranged according to their preference order. Means fourth number is most important, then third number, then second number, then first number. So these 3 notes are given here. First note, one more time I am going to read first note. The selected carbon atom chain is the must be longest, continuous, maximum number of double bond, triple bond, maximum number of prefix and maximum number of the functional group. Note number second, numbering is always start from the 1 degree carbon atom up to the 1 degree carbon atom. That I given you explanation also कि 1 डिग्री से स्टार्ट करके 1 डिग्री तक ही क्यों ले जाते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप रूल. तो अगर इसको मिनिमम नंबरिंग दे रहे हैं तो हम यहाँ से नंबरिंग, अगर ये क्वेश्चन है तो हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं यहीं से कर रहे हैं. तो दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज numbering cannot start from the secondary carbon atom. It always start from the primary carbon atom. Clear? So this is note number second, and third is the all the given rules are arranged according to their order of preference. Clear? Now this is the notes. Now rule number first.
rule number first. Now I am going to start the rule number first. Before this rule, you must remember the notes also. Rule number first is the minimum number of prefix rule. First rule is the very simple, or least number. Least or minimum number of prefix rule. First rule is the least or minimum number of prefix rule. What is the meaning of minimum number of prefix rule? Minimum number of prefix rule means, like suppose if I will write the question CS3, CH, CS3, CS2 and CS3. Now this one is the primary carbon atom. If numbering start 1, 2, 3 and 4, from this side 1, 2, 3 and 4. So you see from this side 2 number position prefix, except selected carbon atom chain is known as prefix. So this one is the prefix. When you will start from this side 2 number, when you will start from this side 3 number, it means minimum number or least number from this side. So that is why this is correct, this is incorrect. The first rule is the least number or minimum number of prefix rule. Rule number second. Rule number second is the, according to rule number second, minimum sum of prefix locant rule. Minimum sum of prefix locant rule. It means if more than one function, more than one prefix is present in any organic compound, then we will arrange the, like suppose example I am going to give you. We will write the numbering and then we will add the position of the prefix. Like suppose CS3, CS2, CH, 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 CH and CS3. Like suppose here CS3 is there. Now CH, CS3 and CS3, here 2 prefix. Here also C2H5, CS3. Now here CS3, आप इसको और बड़ा कर सकते हो, CS3. Suppose this is a compound. Clear? So when you will start the numbering from this side, you see 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And when you will start the numbering from this side, like this side, then you will write 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 number, longest chain is 7 number. Clear? Up now this one is not coming in root words, so that is why except selected carbon atom chain is known as prefix. So these all are prefix. You see that these all are prefix. Clear? Now you will add the prefix position. You see here 2 number position, first from this side 2 number, then 2 plus 1 methyl, again 1 more, plus 3 also, plus 4 having 2, 4 plus 4, plus 5 having 1. So this is the prefix. When you will add this sum, so you see that 2 to 4, 3, 7, 7, 8, 15, 15, 5, 20. Clear? And when you will add from this side, so 1, 2, 3 and 4. 4 number having 2 prefix. So 4 plus 4 plus 5 number having 1 prefix, 5 plus 6 number having 2 prefix, 6 plus 6. So when you will add 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 25. So you see that minimum sum of prefix, this one is the less. So that is why this one is correct. It means this numbering is correct and this one is the incorrect. So what is the meaning of minimum sum of prefix locant rule? I hope you understand. First one is the minimum number of prefix. Second one is the minimum sum of prefix locant rule. It's very simple rule. ढेर सारे, अगर खूब सारे प्रीफिक्स एक दूसरे से अटैच रहेंगे, जितने भी खूब बड़ा सा कंपाउंड लिखा हो, चाहे जितना भी प्रीफिक्स, सबसे बड़े लंबी चेन चुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफिक्स हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ क्या लगे हुए हैं, सब प्रीफिक्स हैं। तो बोथ साइड लॉन्गेस्ट चेन इज 7 नंबर, then we will add both side and we will get here 25. So this one is wrong and this is 20, it means it is correct.
तो रूल नंबर सेकंड इज द minimum sum of prefix locant rule. I hope you all understood. Clear? Now rule number third. Rule number third is rule number three. According to rule number 3, minimum number or least number. Minimum number of double bond and triple bond rule. Minimum number of double bond and triple bond rule. It means rule number 3 is the डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए. क्लियर? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिलनी चाहिए. अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो जब ढेर सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? मिनिमम इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, then minimum sum rule is applicable. Minimum sum rule is applicable. इसका मतलब अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी कंपाउंड में है तो दोनों साइड से जो लॉन्ग चेन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों साइड से आप क्या करोगे? ऐड करोगे और मिनिमम सम रूल को अप्लाई कर दोगे. दैट इज मिनिमम सम रूल इज एप्लीकेबल. क्लियर? मिनिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर कम से कम नंबरिंग देने की कोशिश करेंगे, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल होंगे तो क्या होंगे? मिनिमम सम रूल इज एप्लीकेबल. वन मोर थिंग, if double bond and triple bond are present in identical locant, this one is very important, very IMP. If double bond and triple bond is present in identical locant means अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिमिलर पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे तो we will prefer double bond. Means then we will preferred or minimum number we will give to the double bond. Minimum number give to double bond or double bond is dominating position. Why? In seniority table in previous video I was explaining you the seniority table. Then I explained you the seniority table double bond above, then triple bond. So that is why you will prefer the double bond in identical locant. Now I am going to give you this type question is given in exam, many time given is CBSE, NEET. Now NEET is going on, so that exam given on the basis of this double bond and a very simple question given and the student is confused. So there no need to confuse, you see that. I am going to give you the example. 1, 2, 3, 4, 5. Like suppose here double bond is present and here triple bond is present. All the balance is balanced by the hydrogen. Now double bond identical locant पे present है. देखो, see that identical locant means when you will start from here 1, 2, 3, 4, 5, and when you will start from this side then 1, 2, 3, 4, 5. अब देखो इस साइड से कर रहे हैं तो आइडेंटिकल ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे आ रहा है और इस साइड से करने पे डबल बॉन्ड एक नंबर पे आ रहा है. तो आइडेंटिकल locant if given then we will prefer the double bond. Because of seniority table double bond is more preferred. Clear? How the question was given in many competitive exam. कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया और इस कॉन्सेप्ट को, तो इसको ध्यान से देख लो. इसको चार तरह से क्वेश्चन को कंफ्यूज कर सकता है. आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑप्शन आल्सो. हाउ विल राइट? लाइक ऑप्शन नंबर फर्स्ट A is given like 1, 2, 3, 4 and 5. तो root words is pent. Now pent 1 in, देखो from this side when you will see first option is given pent 1 in 4 ion. Pent 1 in and 4 ion. First option is given. Second option is given pent 4 ion and 1 in. Third option is given. Now from this side pent
1 in, see 1 number position, paint 1 in, sorry here written paint 1 in 4 iron ना, that is wrong. चलो इस ऑप्शन को लिख दिया तो कोई बात नहीं. देखो that 5 carbon paint here written 1 in 4 iron, so it means I have taken from this side 1 in 4 iron. अब now I am going to give change the position. If given paint 4 in, इसको हमने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया. Then next option you will see from this side, paint 1 iron and 4 in, and D option is given, paint 4 in and 1 iron. So you see that 4 option is given. All the options are like, सब options सही लग रहे हैं देखने में, but here 2 things are there, double bond and triple bond present and identical locant, so we will prefer double bond. It means this numbering is right and this one is wrong. So if double bond you will prefer, so then paint 1 number position is correct. अब now 1 number position is 2 places, you see here also and 1 number position is here also. Clear? So which one you will write? You will write the right. You see, if double bond, triple bond, many other functional group is also given. चाहे जितने भी functional group लिखा हो, चाहे जितना भी double bond, triple bond लिखा हो, then we will write first after the root words. We will mention the position of double bond first. Then we will mention the position of triple bond. Getting or not? First we will mention the position of double bond after the root words. डबल बॉन्ड दिया हो, ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, कितना भी फंक्शनल ग्रुप दिया हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. डबल बॉन्ड की पोजीशन चाहे जितनी भी हो, 1 नंबर पे हो, 10 नंबर पे, उससे नहीं मतलब है. आफ्टर द रूट वर्ड्स वी विल राइट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फर्स्ट. इट मीन्स दिस ऑप्शन इज, सी दैट this numbering is correct. So according to this numbering, paint 1 in 4 iron is the correct option. But you see these all options are identical, but these all are incorrect. Getting or not? I hope you understand. इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा पोजीशन. क्लियर? वन मोर थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिलेटेड टू दिस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. I told you कि if double bond and triple bond is unidentical position, like suppose CH, CH2 double bond CH, either if CH2 double bond CH, CH2 CH or C triple bond CH or C CH3. This is unidentical position. Here one number, here two. Here if you will numbering start from here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And when you will start from this side, then you will write 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this one is the numbering. You see this numbering 1 number position, and this numbering triple bond is present in 2 number position. Means position is unidentical. If unidentical position is there, so we will prefer the double bond. So here you see double bond is the preference order 1 number, and from this side when you will see that double bond 5th number, so that is why this one is correct and this one is incorrect. Clear? How will write the name of this compound? You see 6 number carbon, root words is hex, and already I told you double bond चाहे 1 नंबर पे हो चाहे 10 नंबर पे हो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? hex 1 in and then here 4 ine. Clear? This is the name of this compound. Now if more than one double bond and triple bond is present, then how will CH double bond? चलो I will write here CH3 CH double bond CH, then again CH2 CH CH double bond CH, फिर CH, then here again CH CH2, then C triple bond CH, then चलो नहीं कर देते. You see here double bond 1, 2 double bond given, 1 triple bond is given. The numbering will start from, if you will start from this side 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, and when you will start from this side you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Clear? अब हम इधर से अगर नंबरिंग देखते हैं तो you see that 4 number position having 5th number position having first double bond, and 2 number position 1 double bond. So you will write 2 plus then 4, sorry 5th number position 2 plus 5 plus
You see here 8 number position, 8. So 8 to 10, 15. And when you will add from this 1 number position, now again 1, 2, 3, 4 number position, 4 plus 5, 6, 7 number position. So that you see that this is I think 12, here 15, here 12. So this one is the correct, this one is incorrect. It means this numbering is correct, this one is incorrect. Clear? So if the minimum sum, more than one double bond and triple bond is present, then we can apply the minimum sum rule is applicable. Clear? Clear about double bond and triple bond? I hope it is clear. Everyone, one more times. Minimum number of double bond and triple bond rule. कम से कम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग देंगे. If more than one double bond and triple bond is present, then minimum sum rule is applicable. That example I given. You see triple bond more than one. You start numbering from this side, and when you will add, here number is less. That is why you will prefer this one. In case of identical locant, we will prefer double bond over triple bond. Means double bond dominating over triple bond. So here you see that 1 number, 2 number, 3 number, 4 number, 5 number. Here double bond position 1 number. So here this side 1 number is triple bond, this side 1 number is double bond. So we will prefer this one. Double bond, triple bond, any functional group is present. After the root words, we will write the position of the double bond. चाहे जहाँ भी होगा उसी को पहले लिखेंगे. I hope it is clear. Rule number 3. Understood everyone? Next, rule number 4, and it is very, very important. It is very important. Rule number 4. That is rule number 4. Rule number 4 is minimum number of functional group rule. Functional group rule according to priority order. That already I given you. या सीनियरिटी टेबल. सबसे कम नंबर हम किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को. ऑलरेडी यू रिटन नोट नंबर 3. These rules are based on according to their order of preference. It means 4th number rule is more important than 3rd number rule. 3rd number rule is more important than 2nd number rule, and 2nd number rule is more important than 1st number rule. I hope you all understood. There are many small rules, like we will arrange the alphabetical, all the prefix will arrange in alphabetical order. First letter is capital, other letters are small. That I will explain you in question. When I will give you the question, that time I will explain you. But these rules are only 4 rules and 3 notes. If you will remember, then IUPAC rule आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. There no need to learn the IUPAC rule, because never ask the rule, always ask the application. Application means question. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लोगे तो आपको रूल रटने की जरूरत नहीं है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट रूल. नाउ रूल इज फिनिश्ड. नाउ दिस रूल इज फिनिश्ड. आफ्टर द रूल, so now rule is finished. Next in next video I will explain you that IUPAC nomenclature of certain specific group, specific like ether, amine, amide, ester. That I will give you one by one certain specific group. Thank you so much.